Now the next question is, again it is question number I think 28. Okay, but it is in or. ओके और यहाँ पर बिल्कुल सेम ही हमको एक्सप्लेन करना है जो हमने पहले एक्सप्लेन किया है, पर यहाँ पर इंडक्टर के लिए हमको बताना है। ओके, हमारे पास एक इंडक्टर है। ओके, एक इंडक्टर है और उस इंडक्टर के अक्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है, वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट किया है। ओके, और इसका पोटेंशियल V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी गिवन है। ओके, है ना, कंडक्टर है, सॉरी इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है L। ओके, हमको बताना है करंट का एक्सप्रेशन फाइंड करना है और बताना है कि करंट जो है वो लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन नाउ। सो इन केस ऑफ इंडक्टर, फॉर इंडक्टर this V is equal to this V, which is function of time t, Vt, okay, is equal to L di by dt, and this current also function of time. So if you are finding this di, so what you have to do, this dt we can multiply, so dt into t, which is equal to L di. Now if you are integrating both sides, so this integration of di with respect to di is equal to 1 by L integration of Vt with respect to t. Okay, so this d will cancel out by the integration, you will get It, the current is equal to 1 by L integration Vt dt. Is this clear or not? Okay, so that is the current in inductor. Current in inductor. Okay, if you want to find the current in capacitor, it is the in form of differentiation, but in inductor it is in form of integration of potential. So just write down the value of this E V t, which is equal to V naught sine omega t. Okay, so this It now will become, this It is equal to 1 by L integration V naught sine omega t dt. Okay, so this V naught is constant, जो कि हम कॉमन ले सकते हैं, V naught डिवाइडेड बाय L, इसको हमको कैपिटल V naught लिखना चाहिए, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। हमको उस कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है जो टी का मल्टीप्लिकेशन में है, टी के मल्टीप्लिकेशन में। ओके, so it is equal to now minus V naught divided by L into omega cos omega t. Okay, this It is equal to minus, okay, minus V naught divided by xc into cos omega t. पहले हम पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। दिस it is not xc, it is xl. This xl is equal to omega L, that is called a reactance of inductor, that is called reactance of inductor, omega L. So this peak value of current I naught is equal to V naught by xl, that is the peak value of current. Peak value of current. So the expression for current now become, listen carefully, expression for the current now become It is equal to I naught, और वो भी माइनस का है, माइनस I naught cos ओमेगा टी। ओके, और एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि cos पाई बाय 2, सॉरी साइन पाई बाय 2, बहुत इंटरेस्टिंग, साइन
पाई बाई टू माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और यहां पर अगर हम इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते, दोनों साइड माइनस माइनस लिख देते, माइनस साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया, और माइनस साइन एक ऑड फंक्शन है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस माइनस कॉस थीटा कैन रिटर्न एज साइन थीटा minus pi by 2. Okay, theta minus pi by 2. So this minus cos theta, now this current can written as I naught sine theta, which is equal to omega t in this case, omega t minus pi by 2. Okay, तो यहाँ पर हमको करंट का एक्सप्रेशन मिला। वाई वी आर कन्वर्टिंग दिस इनटू साइन? क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमको जो रेफरेंस पोटेंशियल दे रखा है उससे कंपेयर करना। पोटेंशियल क्या दे रखा है? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस? दिस फेज डिफरेंस between current and voltage is pi by 2, and this negative sign is showing that it is lagging. Current is lagging behind the voltage. Current lagging by pi by 2 behind the voltage. Behind the voltage. Okay. So if you are just plotting the graph between time, and first we are talking about the potential given. So it is function of sine, like that, sinusoidal function. It is for Vt. Okay, and for current minus cos omega t. Okay, it is minus cos omega t. So cos का फंक्शन इधर पॉजिटिव बनता है तो माइनस का कैसा बनेगा? ऐसा अपोजिट, like that, like that, like that. It is current It. Okay, so that is the graphical representation of current and voltage. Thank you very much.